student. I am Dr. Bhanumati Panda, Associate Professor, Department of Applied Science and Humanities, ABES Engineering College, Ghaziabad. Today we'll discuss about some problems or function whose representation in terms of Fourier series, right? तो जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, उसको मैं थोड़ा समराइज कर रही हूँ. सो इफ एनी फंक्शन इज गिवन in the interval c to c plus 2 pi or 0 to 2 pi, suppose the interval is given c to c plus 2 pi, then the Fourier series, agar interval ye hai, this is the interval given, then the Fourier series representation of function fx is equal to a naught by 2 summation n varies from 1 to infinity a n cos nx plus summation n varies from 1 to infinity bn sin nx, जिसमें a naught a n b n को हम फोरियर कोएफिशिएंट्स कहते हैं या यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं. कैसे हमें फाइंड आउट करना है? a naught इज इक्वल टू 1 by pi c to c plus 2 pi fx dx, राइट. सिमिलरली a n की वैल्यू क्या था? 1 by pi इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi fx cos nx dx, cos nx dx, और a n के वैल्यू जो था आपका 1 by pi इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi fx sin nx dx. ठीक है, ये हमने किया था. सो अगर मान लीजिए इफ c is equal to 0 और c is equal to 0, then a naught will be equal to, वही इंटरवल आपकी 0 to 0 plus 2 pi, that means period will be 2 pi, upper limit minus lower limit, already मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. then a naught will be equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx dx, right, and a n will be equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx cos nx dx, cos nx dx, and bn will be equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx sin nx dx, sin nx dx, right. अगर मान लीजिए if c is equal to suppose minus pi, then what will be a naught? A naught will be 1 by pi minus pi to pi fx dx. interval, again the interval will be minus pi to pi. इसमें जो interval आपका आ जाएगा, the interval will be minus pi to pi. again it will be the period 2 pi. पीरियड क्या हो जाएगा इसमें? पीरियड इसमें भी आपका 2 pi है, राइट. एंड ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज 1 by pi इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स cos nx dx, cos nx dx, and bn will be equal to 1 by pi minus pi to pi fx sin nx dx. ठीक. So these are the Fourier coefficients or representation of Fourier coefficients having different intervals. Now we'll solve one question or a function. Suppose the question is given, find the Fourier series representation. Find the Fourier series. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ. Find the Fourier series representation of fx is equal to x in 0 less than x less than 2 pi. That means the interval is given 0 to 2 pi, right. कहाँ से हम start करेंगे? We'll start the Fourier series representation. The Fourier series representation of fx is equal to, that is a naught by 2. पहले हम ये वाला सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे. n varies from 1 to infinity a n cos nx plus summation n varies from 1 to infinity bn sin nx. ठीक है, हम इसमें ये तीनों फोरियर कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड विल पुट इट इन दिस इक्वेशन. So what the a naught is? A naught is equal to 1 by pi integration
जो भी इंटरवल में आपका लिमिट दिया होगा, जो भी इंटरवल दिया होगा, दैट विल बी योर लिमिट, दैट इज 0 to 2 पाई। अगर -π to π दिया होता तो -π to π लिखते, एफ एक्स डी एक्स, right? So the value will be 1 by pi integration 0 to 2 pi fx is your x dx. So this is equal to 1 by pi x square by 2 0 to 2 pi. ठीक है, तो 1 by 2 pi आप बाहर ले लीजिए, टेक इट आउटसाइड, एक्स स्क्वायर अपर लिमिट पुट करिए, दैट इज 4 pi square minus lower limit is 0. So the value is 2 pi. That means you are getting the value of a naught is equal to 2 pi. Similarly, we'll get the value of an. An, the formula for an is 1 by pi 0 to 2 pi fx cos nx dx, right? fx cos nx dx. So we can write it 1 by pi 0 to 2 pi fx के जगह हम x cos nx dx. ठीक, हाउ टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल, हमने एक फॉर्मूला आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, दैट इज यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा, यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलेगा. नाउ वी वांट द वैल्यू ऑफ, हमें क्या चाहिए, ए एन की वैल्यू क्या था, ए एन वॉज 1 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स cos nx dx. सो हम u किसको लेंगे, u हम x को लेंगे जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डेरिवेटिव आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी 0, प्रेफरेबली यू चूज दैट u एंड v विल बी cos nx. यहाँ पे आप टेबल बना लीजिए, u इज इक्वल टू x एंड v इज इक्वल टू cos nx, राइट? पहले डेरिवेटिव निकाल लीजिए, u डैश इज इक्वल टू 1, तो हमें v2 तक चाहिए, हमें ये दो इंटीग्रेशन चाहिए. सो v1 विल बी cos nx का क्या हो जाएगा आपका sin nx बाई एन, v2 विल बी माइनस ऑफ cos nx बाई एन स्क्वायर. ठीक है, अब आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो यू विल गेट 1 बाई पाई u v1, u मीन्स x, v1 इज sin nx बाई n माइनस u डैश कितना है आपका 1, v2 इज माइनस ऑफ cos nx बाई एन स्क्वायर. ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई. नाउ लुक एट दिस टर्म, ये टर्म आप देखिए, अपर लिमिट अगर मैं साइन एन एक्स में अपर लिमिट एक्स के जगह 2 पाई करें तो 2 पाई साइन टू एन पाई, वी नो दैट साइन टू एन पाई इज इक्वल टू 0 और cos टू एन पाई की वैल्यू क्या है, cos टू एन पाई इज इक्वल टू 1, राइट? ये फॉर्मूला. सो ये वाला टर्म आपकी कंप्लीटली 0 हो रहा है. Now we'll substitute here, that is 1 by pi minus minus plus 1 by n square pi आप बाहर ले लीजिए. Now substitute cos 2n pi minus cos of 0. Now cos of 0 is 1, cos of 2n pi is also 1, so the value of this is 0. So we are getting an is equal to 0. ठीक है, सिमिलरली गेट द वैल्यू ऑफ bn. bn क्या है आपका, 1 by pi इंटीग्रेशन 0 to 2 pi fx sin nx dx, sin nx dx. So this is equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx will be x sin nx dx, right? So we'll get this value 1 by pi. Again, take this value as u, take this value as v, u v1, that means x into v1 कितना हो जाएगा sin nx का, that is minus of cos nx by n, माइनस u डैश इज 1, v2 माइनस cos nx का कितना हो जाएगा आपकी, माइनस sin nx बाई n स्क्वायर, लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 2 पाई. नाउ लुक एट द सेकंड टर्म साइन वाले टर्म में x की वैल्यू 2 पाई पुट करूंगी, अपर लिमिट sin 2n पाई 0 0, सो दिस टर्म इज कंप्लीटली 0 हो रहा है आपका. सो बच्चा क्या है, टेक द नेगेटिव कॉमन, माइनस 1 बाई n पाई, तो x के जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपर लिमिट, दैट इज 2 पाई cos 2n पाई माइनस 0 में तो 0 हो गया, सो यू आर गेटिंग दिस इज minus 1 by n pi into 2 pi, that is minus 2 by n. So you are getting the value of n as minus 2 by n. a naught की वैल्यू हमारा क्या था, a naught was
A naught was 2 pi, an was 0, bn is minus 2 by n. So what the representation of fx, हम किससे represent कर रहे हैं? x को represent कर रहे हैं in terms of Fourier series for the interval 0 to 2 pi. So a naught की value था 2 pi by 2 summation n varies from 1 to infinity. an की value 0 है तो an cos nx वाला term 0 हो गया. bn is your, what is the value of bn? That is minus 2 by n. So this is minus 2 by n sin nx. Sometimes इसको series को expand करके भी हम लिख सकते हैं pi minus 2. If we'll expand the series, put n equal to 1, that is sin x by 1 plus sin 2x by 2 plus sin 3x by 3 and so on. You can write this is the Fourier series form. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं pi minus 2 summation n varies from 1 to infinity. The value will be 1 by sin nx by n. You can also write it. So this is the Fourier representation, Fourier series representation of function fx, right? Now, suppose before going to discuss another question, we'll discuss about if it is an even function or odd function, then how to find out the Fourier series expansion. So Fourier series representation of an even or odd function, right? तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? लेट अस सी Fourier series representation of an even or odd function. पहले तो सपोज हम even function लेते हैं. Even function हम किसको कहेंगे? What the even function is and what the odd function is. Even function किसको कहेंगे? If f of minus x is equal to fx, then fx is an even function, right? fx is an even function. Example, fx is equal to x square cos x, right? x sin x, these are an even function. x square, x के जगह minus x substitute करिए, so minus x का whole square cos x square. cos x, x के जगह minus x substitute करिए, cos of minus x is cos x. x के जगह minus x, so minus x, sin of minus x, that is minus sin x, again it is fx. जैसे suppose fx is equal to x sin x, right? So if I'll replace x by minus x, then I'll write minus x into sine of minus x. So sine of minus theta is minus sine theta. So you are getting x sin x, which is your fx. So fx is an odd function. अगर आपकी odd function है, हमें पता है property that is minus a to a f of x dx. If fx is an even function, then we can write this is 2 times 0 to a fx dx, provided fx is an even function, ठीक है. Similarly, हम odd function किसको कहेंगे? So odd function हम किसको कहेंगे? What is the definition of an odd function? अगर if f of minus x is equal to minus of fx, then fx is an odd function. Is an odd function, right? So in this case, example पहले लेते हैं. fx is equal to x cube sin x, x cos x. These are the example of an odd function. x की जगह minus x substitute करो, minus x cube में भी आएगा. Sin x, sin of minus theta minus sin theta. X is an odd function, cos x is an even function. So even into, you can remember, even into even, that is an even function, ठीक है. और odd into odd, an even function,
even function. Similarly, odd into even या even into odd, that is an odd function. तो अगर odd function है minus a to a fx dx will be equal to 0 provided fx is an odd function. ठीक है, odd function, राइट. तो ऑड फंक्शन के केस में फंक्शन सिमेट्री होता है ओरिजिन पे, इवन फंक्शन के केस में सिमेट्री होता है आपका वाई एक्सिस में. नाउ विल सी दैट फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, फोरियर सीरीज expansion of an even and odd function. ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं इवन फंक्शन, यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑड फंक्शन. तो इवन फंक्शन के केस में योर फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन विल बी a naught by 2 summation n varies from 1 to infinity an cos nx. ठीक, जिसमें a naught की वैल्यू क्या है, दैट विल बी 2 by pi 0 to pi fx dx एंड an की वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2 by pi 0 to pi fx cos nx dx, cos nx dx. क्यों, क्योंकि fx is an even function, cos nx is an even function, even into even function, so it will be 2 times of this. Similarly, for case of odd function, we'll write the Fourier series expansion summation n varies from 1 to infinity bn sin nx or a naught equal to an, both the value 0, then bn will be 2 by pi 0 to pi fx sin nx dx, right? Provided the interval should be minus pi to pi. अगर ये interval given होगा, then only the concept of even and odd will come, right? Otherwise we cannot use. So we'll take one example. Find the Fourier series expansion, Fourier series expansion of fx is equal to x cube in the interval minus pi less than x less than pi. ना माइनस पाई टू पाई है तो इवन ऑड के कॉन्सेप्ट हम ट्राई करेंगे. अगर माइनस पाई टू पाई नहीं होता, 0 to 2 पाई होता, तो हमें तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती, राइट. सो विल सॉल्व इट. सो द फोरियर सीरीज एक्सपांशन, the Fourier series expansion, Fourier series expansion for fx is equal to x cube, जिसको हम लिख रहे हैं, that will be equal to x cube is an even function या odd function. पहले हम देखते हैं fx is equal to x cube, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, पहले देखते हैं f of minus x is equal to minus x का cube. So this is your minus x cube, which is your minus of fx. So this implies fx is an odd function, right? Is an odd function. So इस केस में we'll write this is summation n varies from 1 to infinity bn sin nx, and what will be the value of a naught and an? The value will be equal to 0. Now we'll find out the value of bn will be equal to, that is 2 by pi integration 0 to pi fx sin nx dx, right? So we can find this value, that is bn is equal to, that is your 2 by pi 0 to pi x cube sin nx dx. Okay, again we'll take it as u, we'll take it as v, make the table. यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक पार्टीशन बना लेना. सो u को आप x क्यूब लीजिए, v को आप टेक v एज साइन nx. ठीक है, तो कहाँ तक हम करेंगे, x क्यूब है, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं, u डैश इज 3x स्क्वायर
u double dash is 6s, u triple dash is 6 and u4 onward सारे 0। तो यहाँ ट्रिपल डैश आएगा तो वहां हम 4 तक इंटीग्रेशन लेंगे। सो व्हाट इज v1? दैट इज योर माइनस ऑफ cos nx by n। and what is v2? This is minus cos का sign, that is sin nx by n square, and v3 will be minus minus plus, that is cos nx by n cube, and v4 will be minus of sin nx by n4। now we'll see that this is minus minus हो गया minus sin this plus, right? now we'll find out this value. This is your 2 by pi. We'll apply the formula, that is integration u v dx. This is equal to u v1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4। यहाँ तक हमें लेना है। सो u v1 u is equal to x cube। v1 क्या है आपका? that is minus of cos nx by n minus u dash is 3x square। what is your v2? v2 is minus sin nx by n square। don't multiply the negative sign because you will get confused। उसके बाद आपकी प्लस माइनस मिस्टेक होता है, बिकॉज फोरियर सीरीज में बेसिकली प्लस माइनस मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है। प्लस u dash v2 u double dash, what is u double dash? that is your 6x। what is your v3? that is cos nx by n cube, and minus u triple dash is 6। what is your v4? that is minus sin nx by n to the power 4। जो भी आएगा will put the limit 0 to pi, right? so now look at the sin term। साइन टर्म जितना भी होगा, अपर लिमिट पाई है तो साइन एन पाई विल बी 0, लोअर लिमिट 0 है तो ऑल द साइन टर्म्स विल बी 0। नो नीड टू इवैल्यूएट इट, यू कैन पुट इट एज 0। rather you have to check the limit। अगर 0 to pi by 2 होता तो मैं यहाँ पे 0 नहीं करती। since the upper limit is pi, lower limit 0, so I am putting it as 0, right? so this is your 2 pi x cube minus 1 by n, बाहर ले लीजिए आप, x cube। so this is your pi cube, right? cos of n pi, ठीक है। अपर लिमिट माइनस तो हम बाहर ले चुके हैं, लोअर लिमिट 0 में आपकी वैल्यू 0, right? similarly plus 6x plus 6 by n cube, take it outside। x लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है? दैट इज पाई cos n pi, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट में x में तो 0 आ जाएगा, दिस वैल्यू विल बी 0। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू दैट इज 2 by पाई, पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए आप। सो 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय n, cos n pi is minus 1 to the power n। ये पाई तो हमारा कैंसिल आउट हो चुका है, प्लस 6 बाय n क्यूब, cos n pi is minus 1 to the power n, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ bn। वी आर getting the value is equal to 6 by n cube minus 1 to the power n minus pi square by n into minus 1 to the power n। well substitute here। so fx हम किससे एक्सपांड कर रहे थे? एक्स क्यूब को एक्सपांड कर रहे थे, दैट इज समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। bn की वैल्यू, bn हमारा क्या आ रहा है? दैट इज 2 इंटू माइनस पाई स्क्वायर बाय n प्लस 6 बाय n क्यूब, माइनस पाई स्क्वायर बाय n प्लस 6 बाय n क्यूब into minus 1 to the power n sin nn। So this is the Fourier series representation of the function x cube in the interval minus pi to pi। So we have used here the even and odd concept। Similarly, ये सारे questions you can try, or in next class we'll find out if fx is given, suppose x sin x in the interval minus pi less than x less than pi, find the Fourier series, find Fourier series representation of Fourier series expansion of fx। Similarly,
ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स in the interval 0 less than x less than 2 pi, then find the Fourier series of Fourier series of fx. In the next lecture, we'll discuss about these two questions. Till then, you try to solve it. You can use the concept here, that is even and odd concept. X is an odd function, sin x is an odd function. So x sin x will be an even function because the interval is given minus pi to pi. In this case, we cannot use the concept of even and odd. We have to find out all the three Fourier coefficients, that is a0, an, and bn, right? So we'll discuss in the next lecture. These are the some references we have taken, right? So thank you.